So Breaking Keshav, metabolism. how was the morning? Had your breakfast? No, ma'am, not now. I Not was now. waiting for my Interview. interview only. Okay, okay. So Akshat, tell me something about your background, your likings. Yes, sir. Yes, sir. Sorry, Yeah. Keshav, sorry, Keshav. ma'am, thank you for giving me this opportunity. I would like to tell you that I am Keshav Khandelwal and I am born and brought up in Jaipur and I have done my CMA qualification in June only and I have got an All India rank 29. Oh, Apart from this, during my CMA journey, I have done my articleship under Chittor and Company Cost Accountants, where I got an exposure in various fields like stock audit of ITC Limited. I have assisted in cost audit of RRV PNL. I have done indirect in the field of indirect taxation. I have filed GST return like GSTR1, GSTR3B, and I have done accounting entries of various entities from supplier as well as from the purchasers. And apart from this, I am also pursuing CMA US, for which I have cleared part 2 last year. And for part 1, my result is awaited. And I have okay, done my BCom from Rajasthan University. ठीक okay. है ठीक है बढ़िया. So Akshat, Uh, do you Ma'am love? Keshav, Yeah, sorry, I'm sorry. Yeah, Keshav. So, do you like accounting, subject accounting? ma'am, I like accounting subject, but when India comes into my life, I don't like that. Okay, so apart from India, can I ask you something about the accounting? Okay, ma'am. So, tell me three tips or tricks where we can maintain accounting accuracy. Three tips and tricks where we can maintain accounting. Accuracy. Ma'am, we can use three golden rules in this, that debit the receiver and credit the giver, Okay. and debit all expenses and credit all incomes. Mm-hmm. ठीक है. Debit what comes in, credit what goes out. Okay. Okay. Suppose in a company this is being happening when you must have heard that this double entry system has a positive side, that to negative side also. Hmm. So I can rotate the entries, I can make the balances. Yes. So apart from these three golden rules, what is your insight? What any other idea you can give me for maintaining the accounting accuracy? Ma'am, in Suppose order to maintain task has account, been given to you in your company that Keshav, tell me any ideas where we can make accounting accuracy. What it would be? ma'am, we can recheck the transactions by someone else also. If I Okay. am doing the accounting entry, someone needs to recheck that I have done it correctly or not, who is Mhm. not related to me or not in my department. As Okay. a result, there will be segregation of duties. Okay. What else? What else? Ma'am, I'm not able to recall right now. No problem. No problem. Okay. How you can improve your the working capital in your company? Improve working capital. Ma'am, but selling more goods by selling more goods. On Mhm. credit. Yes, on credit or as well as on cash also. You know, if Because I want to improve my working capital, should I sell my goods on cash or credit? you can sell it in anything, because in capital current assets, inventory also comes, receivables also come, and cash also come. So if you sell on anything, it will increase working capital. All right. So improvement of working capital means increasing the working capital or decreasing the amount blocked in working capital. Ma'am, decreasing the amount blocked in working capital. Yeah, yeah. So yeah, what else? Will you prepone the payment to creditors or will you postpone payments to creditors? Sorry, I am not able to hear you what you said. Will you make prompt payments to creditors or will you delay the payments to creditor to increase your working capital? In order to increase my working capital. In order to improve, in order to decrease your working capital. Sorry, you are making me confused, like you are saying one time improve working capital, increase, both the things. All Will right. you make the Let, question let, 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 clearly? let, let's just skip this. Let's just skip this Okay. question and I'll ask Yeah, you. we don't want to make you confused. Okay. Okay.
Okay. So how this composition scheme is giving benefit to the small dealers? Ma'am, this benefit is the composition scheme is giving benefit to the small dealers like this. They have to pay tax only by 1% only, and not do not need to maintain tax rate like different tax rates. That 18% they are selling some other goods, 12% some other goods. They have to pay tax only by 1% if they have turnover less than 1.5 crores. Okay. So, is there any benefit in compliances as well? Do they have Yes, to? they have to file quarterly. If they can opt also for quarterly return and monthly payment scheme as well, and they need to file only one return, quarterly return, that is GSTR one, in the third month, after the quarter end, on 13th, before All the right, all right, 13th. all right. What were the major findings in the stock audit of ITC Limited? Sir, even when we were doing the stock audit of ITC Limited, we got to know that they are having various loose tools with them. Like the stock of the previous 10 years was also kept with them. And when we were said them why the stock was there, they said initially they were selling the goods on loose things, like only one item is being sold from a packet. Then subsequently they reduce the amount of selling it on loose tools, and they are reducing their loose tools because it has a dead it is resulting in dead stock for them because no one is purchasing now the loose tools. And second point was that when the goods were in transit for them, they were not having the records on their books, so they are only having that goods note received and issued like that. Mhm. And what are the major stocks, like major products of ITC Limited, which you did in the So stock audit? paper craft industry, there the notebooks, the pens, the pencils, and the erasers like that, What of is the different brand sizes. name? Brand name for paper industry for ITC? Classmate. Okay. So, Keshav, tell me something which is not there in your resume. Sir, my strengths are not in my resume. I would like to tell you regarding that I am very much adaptable and flexible, and it can be known because when I started my articleship, my sir has a deep funda like that. We have to only observe the working environment in the office for 10 days. We will not be given any work. We need to only know that how to serve the clients, how to ask sir about anything, how to behave, and all. And I am very much participative also, that from the 7th day I started asking for work because they allowed me to ask for the work. And during my from my school journey till CMA, I have taken part in many programs, like I have taken IMO exams, SFO exams, and I have taken part in design workshop by UID also, cricket world cricket championship by Jaipur chapter, and all. What is the meaning of the name Keshav? So Keshav means the synonyms of the word name Lord Vishnu and Krishna, Lord Vishnu and Krishna. and it also means long hair. Long hair. Yes, sir. Kesh. Okay. ठीक. So, any three relevance of Lord Vishnu? What? Important qualities of Lord Vishnu, which you like or which you think that these are the qualities of Vishnu. That he was calm, he was very much patient. Mhm. I like only this much because I can have only this much from him. Okay. ठीक है. So, so you have also worked in filing of income tax returns as well. Yes, So, sir. Keshav, considering I'm a lawyer, I've just completed my law, and now I'm planning that I need to file my income tax returns also. So as a professional, I've come to you. You're another CMA professional. I've come to you, and can you assist me? Like, what are the options available for me for filing income tax return, like on the regular basis, or there are certain schemes for the professionals to file the income tax? Yes, there are schemes for professionals also, like Like, 44 ADA, 44 AE. You can hmm. file in those schemes. Can you just explain, because I am a lawyer, I don't know anything. Can you just explain me the nitty-gritties of the thing, how I can go about it, how I can apply, and what? Sir, I'm not able to recall it right now because I have filed ITR for only for few individuals. So you are a professional, right? You'll be Yes, filing your income tax return, CMA. but I'm not able to recall it right now. Mhm. Okay. Can you, Keshav,
you have just mentioned, इधर को. You have mentioned about 44 AD. So 44? 44, you mentioned the Maybe. 44 section AD section of income tax, right? So Yes. is that with respect to the presumptive taxation on gross Yes. basis? Can Yes. you recall the percentage of the gross receipts? 8% and 6%. In what case the 8% becomes 6%? 8% of what? I'm not able to recall that right now. All right. All right. No issue. So what is your favorite subject? Like if I want to ask you some technical questions, what would you say is your core or your best area? GST, cost audit. GST and cost audit. All right. Um, What is the difference between zero rated supply and exempt supply? Ma'am, zero rated supply is a supply on which the tax rate is of 0%. But exempt supply is a supply which includes zero rated supply as well, non-taxable supply, and the supply which are exempted by government through official notification. Okay, how imports are treated under GST law? Imports are treated as a supply under GST. Means when we are importing goods from someone or importing service, then we have to pay GST on these on RCM basis. is it a intrastate transaction or an interstate transaction? Interstate transaction. All right. So, have you filed any cost audit reports with NCA? What cost audit? Reports with the Ministry of Corporate Affairs. You need to No, I have file. not filed. I have only assisted in cost audit. All right. So, do you know that the cost audit reports needs to be filed in XBRL format? Are you aware of Yes. that? Do Yes. you know the full form of XBRL? No, I'm not able to recall it right now. All right. Do you want to take any guess? XBRL. I know only RL. I'm not able to recall XB. It is reporting language. XB. I'm All not right. able to recall. It's extensible business reporting language. Yes. All the filing with MCA now happens in XBRL format. Okay. All right. And just on the same, I see you have done assisted in cost audit of RRVPNL. So what's the full Yes. form of RRVPNL? Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Limited. And Prasaran is what's Prasaran in English? Vidyut Prasaran in English. Prasaran and Vidyut, both Vidyut and Prasaran. What is that in English? It's Some. electricity transmission. So basically, Yes. there are 5 electricity PSUs. Some are Utpadan, that is generation. Prasaran, I think that's distribution. So- all right. Keshav, from my side, I want to ask one last question from you, because you loved GST. So, have you heard about the blocked credit word? Yes, ma'am. You have heard the blocked credit. Okay. So, tell me any two block credits which, in your opinion, should be removed from the block credit list in order to benefit the business. Ma'am, like when a business is purchasing a car or a motor vehicle less than a capacity of 13%, then it should be removed because they have blocked it. If only three exemptions are there. Like if we are purchasing it for reselling, we are purchasing it for renting of vehicle or for driving, like providing driving services. First one is this, and the second one is the food and beverages and all. Only to limited suppliers it was given, which are notified under the act, like factories that you are necessary to do this and all. Okay. Okay. From my side, this is it. Okay, so Keshav, you have written that you have completed a certificate course from Cambridge University. Press top skills. What is that all about? What did you do over there? So these are all courses provided by ICMA, which are necessary to a student who needs to clear an intermediate exam. So I've done only theoretical on these topics. Cambridge University का CMA इंस्टीट्यूट देती है कोर्स. मतलब सर वो क्या बोलते हैं, in collaboration with them they provide us the certification courses. On your theoretical course you have done in that. Yes. Okay. So
Any interesting thing about you? Yes, sir. I'm very much enthusiastic. I love to learn new skills and What is that new skill you have learned in the last 3 months? last 3 months I've tried to learn the Rubik's cube, but I have ended in breaking the Rubik's cube. Okay. Were you able to, solve the complete cube? Any first layer, second layer? Yes, I have made one side only, and One when I side. was trying to make the second side, I broke the cube because it Oh, was not functioning correctly, all Or right, in and all the then right. I last made it one, again. in the last 1 year, what new skill have you learned I apart have from learned Excel, uh, Excel, Excel Excel? skills. Nice, nice. Excel अब सीखा है? No, means initially I was knowing Excel, but not at the level which I know right now. Initially, I Advanced was Excel. knowing only to make the format and all. Now I have learned functions as well, VLOOKUP, HLOOKUP, and all also. Do you read books? No, I don't like reading books. You don't read books? क्या बात? अच्छा. No, कभी आज तक कोई book नहीं पढ़ी? No, except my course books. I have not read Apart from any. that, no books have you have not No. read. Oh, interesting. ठीक है. चलो. Keshav, you have written that you like to play chess. So, can Yes. you name any Russian chess player or any grandmaster from Russia? From Russia, I cannot tell. I can tell from India, Norway, and all. Uh, so, what's the grandmaster from Norway? Who's Norway, the Magnus Carlsen, the world number one chess player. okay. And any two chess players, young chess players from India, apart from Vishwanand? Pragyananda won, the 18-year-old grandmaster, All right. and the second one, I'm not able to recall the second name. Gujarati, I think that is one Gujarati guy. Even I cannot recall, but all right. ठीक है. So thank you, Keshav. Thank you, ma'am. तो केशव सबसे पहले अकाउंटिंग एक्यूरेसी के लिए व्हाट यू कैन डू एल्स मैं वो गोल्डन प्रिंसिपल के अलावा आप और क्या कर सकते हैं सो आई वाज एक्सपेक्टिंग थोड़ा सा 1 second. I should write. Yeah, right. अच्छा अकाउंटिंग एक्यूरेसी के लिए आप और क्या कर सकते हैं थोड़ा सा आप अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर जाते हैं आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई अगर मैम अकाउंटिंग एक्यूरेसी नहीं है तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कहीं पे गड़बड़ हो रहा है हाँ बोलो मैम मुझे लगा मैंने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बोला ना तो उसमें हो जाएगा. नहीं वो तो आपने हाँ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज आपने सही बोला था ठीक है वो बिल्कुल ठीक था उसके अलावा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज आल्सो इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का ही पार्ट होता है ना दूसरा आप है ना ये पेटी कैश के लिए रजिस्टर मेंटेन करवा सकते हैं असेट के लिए रजिस्टर मेंटेन करवा सकते हैं सो दीज आर दी ओके एंड जब हम आपको वर्किंग कैपिटल इंप्रूव करने के लिए बात कर रहे थे तो पहली बात आपने एंड में बोला आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो सो यू आर डिसऑनरिंग द पैनल एंड नहीं मैं आई एम गिविंग यू फीडबैक ना तो आप उसको पॉजिटिवली लीजिए यस मैम. तो पहली बात आप पैनल को ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं क्योंकि हम आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे थे आप खुद कंफ्यूज हो रहे थे आपको समझ में नहीं आ रहा था वर्किंग ये तो हम आपकी हेल्प कर रहे थे कि वर्किंग कैपिटल इंप्रूव करने का मतलब आप वर्किंग कैपिटल डिक्रीज करना चाहते हैं या इंक्रीज करना चाहते हैं तो वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू ताकि आप सही जवाब हमें दे पाए तो वर्किंग कैपिटल जब आप रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे अपना क्रेडिट साइकिल कम कराएं है ना क्रेडिट साइकिल के ऊपर आप वो सोचेंगे कि क्रेडिटर से मैं जल्दी से जल्दी पैसा ले लूं इन्वेंट्री को मैं कम कर दूं इन्वेंट्री अगर रेशो कम होगा तो आपकी वर्किंग कैपिटल इंप्रूव होगी तो ये मेरा सवाल था एक और आप कंपोजिशन स्कीम के बेनिफिट के बारे में जब बात की थी तो बोला कि तो आपने मंथली रिटर्न के बारे में क्वार्टरली रिटर्न के बारे में बात की क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट तो कंपोजिशन डीलर अभी क्वार्टरली रिटर्न भरता है क्या और मंथली पेमेंट करता है क्या नो मैम वो ले तो सकता है कंपोजिशन डीलर नो क्यूआर दैट इज स्कीम ओनली वो टर्नओवर जिनका 5 करोड़ तक टर्नओवर होता है उनके लिए होती है कंपोजिशन डीलर को तो अपना टैक्स भी पेमेंट करना होता है और रिटर्न मंथली एनुअली भरना होता है तो ये गड़बड़ था मतलब ऑल टुगेदर गड़बड़ जीरो रेटेड सप्लाई वो नहीं होती जिसके ऊपर जीरो रेट होती है जीरो रेटेड सप्लाई होती है एक्सपोर्ट सप्लाई मैंने सोचा था एक्सपोर्ट सप्लाई बोल दूं फिर मैंने जीरो रेटेड बोल दिया था हाँ राइट फिर उसके बाद
फूड एंड बेवरेजेस वो आपने सही बोला। इंपोर्ट्स को जीएसटी लॉ में कैसे ट्रीट करते हैं? सिंपल, इंपोर्ट्स आर ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई। इंपोर्ट्स को कैसे ट्रीट करते हैं? इंटर स्टेट सप्लाई की तरह ट्रीट करते हैं। मैंने आपको ये नहीं पूछा कि इंपोर्ट को सप्लाई मानते हैं या नहीं मानते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछती तो फिर आप मेरे को ऐसा जवाब देते कि वो इंपोर्ट और ये, मैंने आपको पूछा इंपोर्ट को जीएसटी लॉ में कैसे ट्रीट करते हैं? इंटर स्टेट सप्लाई की तरह। ओके मैम। ठीक है, आप बहुत कॉन्फिडेंस से, जब भी आपको नहीं आया आपने बोला कि मुझे नहीं पता है, वो ठीक है, और थोड़ा सा स्माइल के साथ जवाब देंगे, बाकी ठीक था। ओके। तो केशव फ्रॉम माय एंड, एक तो थोड़ा सा पीछे होके बैठेगा, थोड़ा कैमरे का या तो पीछा कर ले या तो तू पीछे हो जा, व्हाटएवर, ताकि और फुल बॉडी कम्युनिकेशन हमें दिख पाए। ठीक ओके है, सर। क्योंकि बॉडी कम्युनिकेशन नहीं दिख पा रही है बिकॉज ऑफ द कैमरा पोजीशन। हाँ ये सर मैं वो कर रहा था बट वो दिख नहीं पाई। हाँ, मैं वही बोलता हूँ, तो उसको थोड़ा पीछे ले लो। राइट, नंबर 2, टैक्स ऑडिट क्वेश्चन आपको आना चाहिए था। राइट, वो 8%, 6%, या फिर जब मैंने खुद को एडवाइस करने बोला तो वो क्वेश्चन, इट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन जो इज एक्सपेक्टेड कि आपको आए। बाकी रीडिंग बुक्स, कोई तो एक दो बुक का तो नाम, ऐसा कुछ तो समरी पढ़ लो, कुछ तो कर लो, ऐसा कोई एक दो सर, बुक आपको पढ़ना ही चाहिए, कुछ तो पढ़ो, तो सर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग, पूछ ले तो आंसर तो कर पाओगे। ठीक है, सर कुछ समरी इंटरेस्टिंग आती है आजकल तो बहुत बुक्स की, जस्ट रीड ए समरी, रीड सम ऑडियो बुक, ऐसा बहुत सारा समरी मिल जाता है आजकल। ओके सर। तो बोला आई रीड समरी बुक्स, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाए। बाकी ओवरऑल फ्रॉम माय एंड इट वाज वेरी गुड। आई एम रियली हैप्पी विद योर प्रोग्रेस एंड आई फील आई हैव अ स्ट्रांग इंट्यूशन कि तेरे को सिलेक्शन हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं आना चाहिए। ठीक है, सो या बाकी ये हाँ केशव, इंटरव्यू आपका कॉन्फिडेंस तो देखो बढ़िया है ही, डे वन से है ना, आपसे पहले भी बात हुई थी, आपको जानते हैं हम, उसका इशू नहीं है। दूसरा बात मैं ऐसा कह रहा था कि आपके सीवी में मैं देख रहा था, तो आपकी रैंक को एक और बार लिखना है ना, एक आपने ऊपर लिखा है CMA AR29, एक जो टेबल है उसमें भी रैंक को डालना, ठीक है ना। ओके और जो मार्क्स परसेंटेज है वो क्लब करके लिख दो, भले ग्रुप 1 ग्रुप 2 इंडिविजुअली आपने एक साथ जब निकाला है तो आप क्लब करके उसको परसेंटेज लिख दो। सर। तो वो सर फिर वो परसेंट वो भी लिखूंगे फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट ठीक है, बट आप रैंक भी लिखो, कम से ओके कम सर। 2 बार ही अपनी रैंक मेंशन करो, तो वो दिखना चाहिए। अगर मैंने बाय चांस स्किप कर दिया ऊपर, तो टेबल में दिख जाए कि आपकी रैंक है। ओके नहीं, फिर तो तो फिर वो फर्स्ट अटेम्प्ट भी मेंशन कर देना चाहिए ना। हाँ फर्स्ट टाइम कर दो, वो भले वहां पे अगर आपको स्पेस की इशू आ रहा है, तो जो आपने मार्क्स और परसेंटेज वाला है ना, उसको सिर्फ परसेंटेज कर दो, और सिर्फ परसेंटेज फिल कर दो पूरे थ्रू आउट, ओके सारे सर। स्टेजेस पे परसेंटेज बना दो आप। ऊपर से भले ही हटा दो रैंक, आई गेस ऊपर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सिर्फ टेबल में आ जाएगी तो भी नहीं, एविडेंस। ऊपर तो लिखनी चाहिए सर, सीवी। 2 बार ही रैंक तो करवा दो आप। ठीक है, ओके सर। ठीक है, और उसके अलावा क्या शॉर्टलिस्टिंग और किस किस में आई है अभी आपके? सर ITC होटल्स एंड सीएट। आई जस्ट सीएट, कम बैक इन टू आप कंटिन्यू हाँ कर। ITC और होटल और सीएट में आई है, ओके। और वेदांता का जीडी कल है। ठीक है, कोई ऐसी कंपनी है वेदांता जिसमें तो आपने ले जाएगी, वेदांता तो ले लेगी आपको। वेदांता में शायद अभी 13.5 पैकेज बोला है क्या उन्होंने? 13,45,000 यस सीटी। और PSU में तो जेनपैक कोई, का इंटरव्यू होने वाला था। हाँ वो जेनपैक का वो होने वाला था, मतलब एक असेसमेंट टेस्ट, बट वो टेक्निकल रीजन की वजह से नहीं हो पाया कल। ठीक जेनपैक है। का क्या करोगे? देख, मैम जेनपैक होटल्स कितना पैकेज दे रहा है? होटल्स में मैंने चेक करा था, मतलब मेरे को रिमेम्बर नहीं, मैं एक सेकंड देख के बताता हूँ। 8 या 9 के आसपास देता है होटल तो। नहीं, होटल शायद 10 के आसपास दे रहा था इस बार। 1 मिनट रुक जाओ भाई। तो फिर तो वेदांता ही गुड कॉल है, अगर 3 में है तो फिर वेदांता इज अ गुड कॉल फॉर यू। होटल 12.5 लाख। अच्छा, होटल 12.5 दे रहा है। आईटीसी होटल में भी अच्छा एक्सपोजर है। 12.5 तो बढ़िया है अगर आपको वहां मिल रहा है, क्योंकि हमारे टाइम पे जब आया था तो उसमें तो 8 लाख रुपए हाँ, दिए थे ITC होटल यस में। 8.2 लाख समथिंग। मैं इम्प्रूवमेंट करने के लिए और क्या कर सकता हूँ? नहीं, आप थोड़ा सा टेक्निकल, ये जीएसटी आपका अच्छा है पर यहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ना, मतलब मैं स्कोप वहां नहीं। पे जाके भूल जाता हूँ। होता है, कोई बात नहीं, दोबारा से एक एक बार रीड कर लो, बाकी ठीक है।
और मैम इनकम टैक्स में मतलब मैंने कुछ ही नहीं पढ़ा। नहीं, आपको कुछ पढ़ना भी नहीं है। जितना दीक्षा ने आपको बताया था कौन से आईटीआर फाइल होते हैं, ये प्रिजम्पटिव इनकम, ये बेसिक चीज। उसके अलावा इनकम टैक्स से लीस्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। मैम वो ऐसे पूछ सकते हैं क्या, मतलब क्या बोलते हैं, हम आपको सैलरी देंगे तो ग्रेचुइटी में कितना % डिडक्शन मिलता है, वो ये चीजें। रेयर ओके। हो भी सकता है, मैं ऐसे नहीं कहूंगी, फिर भी थोड़ा बहुत तो बेसिक मतलब आइडिया मेनली जीएस की कॉस्ट और कॉस्टिंग को इम्प्रूव कर लूं। ओके ठीक है। थोड़ा बहुत बेसिक इनकम टैक्स, ठीक है ना? बाकी ओवरऑल बढ़िया है आपके। थोड़ा सा सीवी में आप है ना इसको जो एक तो जो फॉन्ट का अलाइनमेंट वगैरह है वो चेक कर लेना। कहीं जगह आपने सेंटर अलाइनमेंट किया हुआ है, कहीं जगह लेफ्ट राइट अलाइनमेंट किया हुआ है, तो वो थोड़ा देख लेना सीवी के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल जो टेबल की हेडिंग्स है, एक यस। मिनट पंकज आप 5 मिनट वेट करो। हाँ हाँ, तो नहीं मैंने किया है, आप बात कर लो तब तक वही हो जाएगा। ठीक है। और उसके अलावा आपकी जो हॉबीज हैं उसमें प्लेइंग चेस, सुडोकू, क्रिकेट, ये ठीक है। पर वॉचिंग मूवीज, लिसनिंग म्यूजिक, अगर इसको हटाना चाहो तो हटा सकते हो। बहुत बेसिक है, मतलब ये लो बिल्कुल नो एफर्ट थिंग्स है जहाँ पे कोई ओके। एफर्ट नहीं लगता आपका। ठीक है, तो चेस अगर आप खेलते हो, चेस में आपको पता है वो 3 स्टेजेस होती है, ओपनिंग, मिड गेम और एंड गेम। बेसिक आइडिया है? यस। ठीक है, तो अगर जैसे आपने चेस ढंग से खेला है, अगर आपने तमीज से थोड़ा सा खेला है, तो चेस को थोड़ा सा हाईलाइट करो, क्योंकि चेस पे ओके। डिस्कशन हो सकता है। अच्छा, ओके। ठीक है ना? और उसके अलावा तो हो जाएगा। अच्छा है आपका प्रोफाइल, पूरा काम आपने किया हुआ है। थोड़ा सा बस रैंक को हाईलाइट कर लो 1-2 बारी और, बाकी चीज अच्छा है। और मैम मुझे एक और चीज पूछनी थी। तो मैम क्या बोलते हैं, कंपनी बेस्ड डिस्कशन कल कितने बजे तक होगा, मतलब कितने बजे से? भाई देखो, आप निकलने वाले हो क्या दिल्ली के लिए? मैम मैं तो कल मॉर्निंग में निकलूंगा, लेकिन क्या है कल 3:30 to 4 अराउंड मेरा जीडी है वेदांता में। नहीं तो जीडी पे तो कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में कोई बात ही नहीं होगी ना। जीडी तो आपको, आप 4 o'clock के बाद आप, मैं कॉल पे बात कर लूंगी आपसे, कोई भी कर लेगा, मैं कर लूंगी, होटल से कर लेगा, उसको कोई ले भी कर आएंगे लेगा। जो उसकी सिस्टर है, सलोनी, जो है ना। हाँ अ, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। क्या नाम है, केशव, कल आफ्टर 4 बात कर लेंगे। ओके जीडी मैम। से फ्री हो वेदांता जाओ। से गीतेश को ले आऊंगा मैं, वेदांता से गीतेश को ले आऊंगा। ओके। हाँ, ठीक है, ओके थैंक यू मैम, ओके, थैंक यू सर। बाय, ओके। All the best. ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।